before reading, this is a voluntary liquidation of corporate person. Okay. So now we are going to study into a different topic. अभी साथ में हम लेकर के चलेंगे कंपनीज एक्ट और ये सब भी. सपोज दैट कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी का लिक्विडेशन भी होता है, राइट ना? कंपनी कंपनी लिक्विडेशन का होता लिक्विड है। तो जो है अब इस टॉपिक पर हम बात करेंगे. दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. I think you will also get excited to continue with this topic also. Yeah. So now start with a reading. Okay. Section 59, voluntary liquidation of corporate persons. Persons. Yes, right. This is Corporate this. person, Yes, इसका मतलब क्या हुआ? वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन. ठीक है ना? हाँ कॉर्पोरेट पर्सन हाँ का लिक्विडेशन कराना है हमें वॉलेंटरी, राइट? हाँ सो हाँ। इस सेक्शन जो है, ये सेक्शन में, इस सेक्शन में को अब स्टार्ट करो पढ़ना. Subsection 1. A corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceedings under the provisions of this chapter. Subsection 2. The voluntary liquidation of a corporate person under subsection 1 shall meet such condition and procedural requirements as may be specified by the board. बोर्ड. एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. ठीक है ना? एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड हम पढ़ेंगे. ठीक है. Hmm. सो नाउ Hmm. सबसेक्शन 3. Without prejudice to subsection 2, voluntary liquidation proceedings of a corporate person registered as a company shall meet the following conditions, namely: A. Declaration from majority of the directors of the company verified by an affidavit stating that 1. They have made a full inquiry into the affairs of the company and they have formed an opinion that either the company has no debt or that it will be able to pay its debts in full from the proceedings of assets to be sold in the voluntary liquidation, and 2. The company is not being liquidated to defraud any person. B. The हेलो, declaration. बसा कदी फ्री हाँ है तो उसे भी बोल दो ज्वाइन कर. B है, हो गया? नहीं उसका चालू था. B. The declaration under subclause A shall be accompanied with the following documents, namely: 1. Audited financial statements and record of business operations of the company for the previous 2 years फॉर ए or for प्रीवियस फॉर ए प्रीवियस 2 years. कितना साल का बैलेंस शीट लगेगा? 2 साल का. 2 साल का फॉर एनी और फॉर द पीरियड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज लेटर. ठीक है ना? हाँ अगर बाद में इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ठीक है ना, तो 2 साल हाँ का कहाँ से लेकर के आएंगे? ठीक है ना? यस. सो नाउ रिपोर्ट. या पढ़ो. a report of valuation of the assets of the company, if any, prepared by a registered valuer. यस. C. Within 4 weeks of the declaration under sub-clause A, there will be 1. A specified resolution of the
the members of the company in a general meeting किधर requiring किधर the है किधर है? general ये C का 1 में हम्म. re- requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professional to act as the liquidator or Yes. to the a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of the period of its duration, if any, fixed by its articles or on the occurrence of any event in respect of which the articles provide that the company shall be dissolved as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as the liquidator. Provided that the company owes any debt to any person, creditors representing two-thirds of the value of the debt of the company shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of such resolution. Okay. Fine. 4. और Subsection 4. The company shall notify the registrar of companies and the board about the resolution under subclause 3 to liquidate the company within 7 days of such resolution or the subsequent approval by the creditors as the case may be. हम्म. Subsection 5. Subject to approval of the creditors under subsection 3, the voluntary liquidation proceedings in respect of a company shall be deemed to have commenced from the date of passing of the resolution under subclause C of subsection 3. Subsection 3. Sub- Yeah. Subsection 6. The provisions of section 35 to 53 of chapter 3 and chapter 7 shall apply to voluntary liquidation proceedings for corporate persons with such modifications as may be necessary. Okay. 35 to 53 is for liquidation. Okay. हाँ This is voluntary liquidation. Provision of हाँ section हाँ 35 to 53 of chapter 3 and हम्म, chapter 8 and chapter 8. 55 to 53 of chapter 3 हम्म, and chapter 8. chapter 55 7 7 chapter 7, sorry, shall हाँ apply voluntary liquidation proceedings for corporate person with a हम्म, modification as may be necessary. As may be necessary, right ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 35 से लेकर के हम्म, 53 तक, 35 से हाँ लेकर के 53 तक का जो सेक्शन है जो कि चैप्टर 3 में डाला हुआ है, shall हाँ apply to voluntary liquidation सच मॉडिफिकेशन मुटाटिस मुटानिस, जहां पर हाँ नेसेसरी मॉडिफिकेशन के साथ में ये अप्लाई हो जाएगा वॉलेंट्री हम्म, लिक्विडेशन के लिए. ठीक हाँ है. सेक्शन हाँ. सबसेक्शन 7. Where the affairs of the corporate person have been completely owned up and its assets completely liquidated, the liquidator shall make an application to the adjudicating authority for the dissolution of such corporate person. वेयर द Subsection 8. या सबसेक्शन uh, ऐड पढ़ते हैं. ठीक है. The adjudicating authority shall, on application filed by the liquidator under subsection 7, pass an order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order and the corporate debtor shall be dissolved accordingly.
The adjudicating authority shall, on an application filed by the liquidator under subsection 7, the adjudicating authority कौन हो गया? NCLT. NCLT, National Company Law Tribunal. The adjudicating authority shall, on an application filed by liquidator. लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन फाइल किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? shall pass an order that corporate debtor shall be dissolved on the date of that order and the corporate debtor shall be dissolved accordingly. तो अभी हम लोग वॉलेंट्री लिक्विडेशन की एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ रहे हैं. We are in the process of completing that section, and next. Subsection 9. A copy of an order under subsection 8 shall, within 14 days from the date of such order, be forwarded to the authority with which the corporate person is registered. A copy of order under subsection shall, within 14 days from the said date, to be forwarded to the authority with which such corporate person is registered. Copy of, तो कौन सा कॉपी फॉरवर्डेड होगा? फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी विच द कॉर्पोरेट पर्सन इज रजिस्टर्ड. कॉर्पोरेट पर्सन किस अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर्ड होता है? किस पर्सन के साथ में रजिस्टर्ड होता है? आरओसी के साथ में. हाँ, आरओसी. आरओसी को फॉरवर्ड होगा ना, है ना? हाँ. कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर की वॉलेंट्री लिक्विडेशन का ऑर्डर पास हो गया है. ऑर्डर पास हो गया ना किसी फॉर्म, कोई ना कोई आरओसी का फॉर्म होगा ना कि इस आरओसी फॉर्म में ये अपलोड करना है. ठीक है ना? आरओसी में 14 दिन के अंदर में फाइलिंग करना होगा. इसे हमने हिंदी में लिख दिया. ठीक है. ठीक है. ये यहाँ कंप्लीट हुआ. अभी ये एक सेक्शन में अगर हम सोचें कि पूरा का पूरा वॉलेंट्री लिक्विडेशन अगर समाप्त हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना. हाँ, इसका बहुत सारा पार्ट है. तो हम वो स्टार्टिंग पहले इसे हम लोग ये कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं. कंक्लूड बाद में करेंगे, पहले रेगुलेशन निकाल लेते हैं इसका. ठीक है ना? यस. यस नरेश, ध्यान रखना कि रिकॉर्डिंग ऑन तो हो रहा है, अदरवाइज फिर इसे रिवाइज करना होगा तो समझो कि फिर दोबारा से करना पड़ेगा. राइट ना? हाँ. सो इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन से स्टार्ट करें चैप्टर 2 में, है ना? ओके. Without prejudice to section 59(2), liquidation proceedings of a corporate person shall meet the following conditions, namely, a declaration from majority of one designated partners if a corporate person is a limited liability partnership, to Yes. individuals constituting the governing body in case of other corporate persons, as the case may be verified by an affidavit stating that 1. They have made a full inquiry into the affairs of the corporate person and they have formed an opinion that either the corporate person has no debt or that it will be able to pay its debts in full from the proceedings of assets to be sold in the liquidation. And 2. The corporate person is not being liquidated to defraud any person. हाँ, तो अभी क्या है, अभी इसका जिस्ट अभी नहीं करते हैं ना, अभी इसे कंप्लीट करते हैं ना. या The declaration under clause A shall be accompanied with the following documents, namely audited financial statements and
record of business operations of the corporate person for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later. later. ठीक है, 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ऑफ 2 साल का या इनकॉर्पोरेशन का हुआ, ठीक है, ठीक है. रिपोर्ट To ऑफ द a वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, यस, या यू स्टडी, यू राइट, रीड. valuation of the assets of the corporate person, if any, prepared by a registered valuer. Within 4 weeks of a declaration under subclause A, there shall be one a resolution passed by a special majority of the partners or contributors, as the case may be, of the corporate person, requiring the corporate person to be liquidated and appointing an insolvency personnel to act as the liquidator, or to a resolution of the partners or contributors, as the case may be, requiring the corporate person to be liquidated as a result of expiry of the period of its duration, if any, fixed by its constitutional documents, or on the occurrence of any event in respect of which the constitutional document provide that the corporate person shall be dissolved, as the case may be, and appointing an insolvency personnel to act as the liquidator, or provided that the corporate person owns any debt to any person, creditors representing two-third in value of the debt of the corporate person, shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of such resolution. ठीक है. 2. The corporate person shall notify the registrar and the board about the resolution under subsection 1 to liquidate the corporate person within 7 days of such resolution, or the subsequent approval by the creditors, as the case may be. 3. Subject to approval of the creditors under sub-regulation 1, the liquidation proceedings in respect of a corporate person shall be deemed to have commenced from the date of passing the resolution under sub-clause C एक of मिनट, the from the passing of resolution, from the date of passing of resolution, from the date of passing of passing of. resolution, that is very important, that is very important. तो जिस दिन पास हो रहा है, वॉलेंट्री लिक्विडेशन भी बहुत प्रकार का होता है. There are so many circumstances in which liquidation or is done. लिक्विडेशन होता है, स्ट्राइक ऑफ होता है, राइट ना. सो कब माना जाएगा, कब माना जाएगा? जिस दिन हमने रिजोल्यूशन पास कर दिया उस दिन माना जाएगा कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन उस दिन से स्टार्ट हो गया. यस, राइट. Explanation. या Explanation. For the purpose of sub-regulation 1 to 3, corporate person means a corporate person other than a company. corporate person, for the purpose of regulation 1 to 3 corporate person means a corporate person other than a company. कॉर्पोरेट पर्सन जो है, कॉर्पोरेट पर्सन अदर देन कंपनी, ये क्या कहा है भाई? ये जो क्वेश्चन मार्क इसमें अगर लगाएं, ये क्या कहा है, इसको समझेंगे बाद में, ठीक है ना. इसे जब हम लोग कंक्लूड करेंगे उस समय समझेंगे, है ना. For that declaration under sub-regulation 1A under section 59(3)(a shall
list each debt of the corporate person as on that date and state that the corporate person will be able to pay all its debt in full form the proceeds of assets to be sold in the liquidation. लिक्विडेशन, ओके। अभी ये जो है, ये 4 नंबर, 4 नंबर, ये चार ये नंबर 2022 में आया है। 22 में आया है, न्यू आया हाँ है ना? न्यू हाँ न्यू आया है 2004-22 में। इसमें जो ये नोटिफिकेशन रहता है ना, ये नोटिफिकेशन आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया होगा, इस सिचुएशन को भी हम लोग क्रिएट करेंगे। लेकिन सिचुएशन क्रिएट होगा कि तब जब एक बार हम लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ। मैं क्रिएट करूंगा इसका सिचुएशन, ठीक है। The declaration under sub-regulation 1A or under 59(3)(a) shall provide that the corporate person has made provision for प्रिजर्वेशन, preservation preservation of its records after its dissolution. डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक हुआ कि ये एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये क्या है, प्रोसीजर है, एक्ट में बोलता है ऐसा होना हाँ। चाहिए, लेकिन ये हम्म। काम कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अभी इसके पहले दिया था, रिजोल्यूशन ना ना पास इस किया था। एक मिनट एक मिनट, इसमें ये बोल रहा है कि अपना जो डॉक्यूमेंट ये सब प्रिजर्व करेगा। प्रिजर्व कर लेगा, हाँ प्रिजर्व कर रहेगा कि हाँ प्रिजर्व रखना है। कर लेगा। एक चीज मेड पे इसमें होता है। ये है। हाँ हाँ। हाँ। एक चीज ये है, वो अपना सारा एसेट्स लाइबिलिटी डिजॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसके पास में जगह कहाँ पे प्रिजर्व करेगा। अगर कॉर्पोरेट पर्सन है, आज एक ऑडिटर है, ऑडिटर ऑडिट करता है, ठीक है ना? ऑडिटर ऑडिट करता है, हाँ। ठीक है ना? कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, बाद में वो हम्म। बिजनेस करना छोड़ दिया, ठीक है ना? हम्म। दूसरे बिजनेस हम्म। में आ गया, एक नॉर्मल हम्म। प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। तो वो अपना रिकॉर्ड रखता है कि नहीं 8 साल तक, ये बताओ। ना ना वो तो रखता है, मगर ये तो कंपनी का ये बात है, कंपनी अपना पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया, कंपनी का सारा काम, एसेट, कंपनी काम खत्म कर दिया, कंपनी कंपनी का, डिजॉल्व हो गया। कंपनी डिसॉल्व हो गया, तो कंपनी का तो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, प्रमोटर है, हाँ हाँ हाँ। प्रमोटर तो वो है, रखेगा। वो ओके रखेगा, वो रखे। है ना? ओके ओके। ठीक। और इसमें इसमें अगर इसमें कंफ्यूजन है, किसको कौन रखेगा, डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रोवाइड द कॉर्पोरेट पर्सन है शैल मेड द प्रोविजन ऑफ द, हाँ कॉर्पोरेट पर्सन रखेगा। हम्म। बात की है कि प्रोप्राइटरशिप यहाँ होता है, यहाँ कंपनी में दे दिया सब कुछ। अच्छा, अभी हाँ हाँ। इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन। हम्म। 1. The corporate person shall from the liquidation commencement day ceases to carry on its business except as far as required for the beneficial winding up of its business. ऑफ इट्स 2. बिजनेस। Notwithstanding the provision of subsection 1, the corporate person shall continue to exist until it is dissolved under subsection 59(8). ठीक है, इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन। अभी हम चैप्टर 3 में आ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। चैप्टर 3 में के लिए अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, और दूसरा सेशन के लिए भी अपने पास अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है ना? हम्म। सो इट विल बी बेटर कि अभी जस्ट ए मिनट,